Assalamu alaikum, this is Sania Khadir from 101 Incredible Women Seas of Pakistan. Today, the personality that is sitting with us is Miss Maliha Sami, and she is the business partner of Evercare Hospital. Apart from that, she is a YouTuber and she does so much for the community. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Thank you very much, Sania, for introduction and also for inviting me in 101 CEO's YouTube channel. And it's a very positive and very impressive platform. And I'm greatly impressed and really encouraged. Thank you so much. तो Miss Maliha, आप बताएं कि आपकी ये journey start कहाँ से हुई? What is your educational background and what led you to success? Sania, my educational background is purely of journalistic. I done my graduation from Kinnaird College and then masters from Punjab University in 2000. I started with jobs in media and in private sector, in education sector. So in over a period of 22 years, I have done more than 8 to 10, jobs over there in other companies. And that's related with Punjab University, TV channels as well. So that's a diversified experience, also in advertising as well as in sector related with community, operations and community services. Then I started my own YouTube channel, which is the title is Marfat-aur-Wilayat-e-Ali. It started from 2013 onwards, and it's going very well, alhamdulillah, with 5 lakh views on it and more than 450 videos. And this is purely a channel which is based on spiritualism, spiritual journey, the purifying your own soul, and also how we can relate ourselves with Allah. And till now it's going perfectly, like 8,000 plus subscriber we have. And at currently, if I talk, I am working as a business partner for impacts and partnerships with Evercare Hospital Lahore. So it's a very challenging and very inspiring job. And it's my first job in healthcare sector in a hospital, and I'm basically working for their promotions, for their MOUs, for their contracts, for their partnerships at national as well as at global level. Okay, so you have been working with lots of NGOs, and now you've been working. Now you're working in a corporate sector. Yeah. So how has it been for you? Previously also I am working with corporate sector. I worked with the Fatma Memorial Group as well, and they have their university, they have nursing college, and they have some other institutions. So it's more related with educational sector and social sector both. Okay. So corporate environment is quite different, and when you enter in corporate environment, it's more related with target oriented. It is very much, you have to achieve certain goals in a certain time. And the atmosphere is entirely different than from social organization and also from educational organization, because corporate people are very focused for their journey. They are very focused for their yearly goals, and they want very specific, and there is a very thin line that you have to follow. Their atmosphere is different, their environment is different, their culture is different, and they are very focused on improving each other's work. They are supportive people, and I feel this thing that they don't waste time, and they are very focused for their targets, and they simply refuse to be in backbiting or in other things. So their core purpose is that all the people should work together for organization, and we need to pull it for a better time. So after doing all of this, you're also a motivational speaker. Yeah. So what is your target audience, and what are some of the key points that you want to instill in the youth now? Since my experience have been, all the time related with media and advertising and social issues, so I've been a very good speaker. When in my university time as well, I was a prize winner debater as well. So being a communication, and for this field, when I joined journalism, the core purpose was to write articles, to be a good blogger, to be a good communicator. So this was the one thing which was inner my side, that I want to communicate and interact with the people. Okay. So with this learning, I started as motivational speaker. I have been in different programs on different channels, covering women issues, social issues, writing articles, being in the public forums, because there is a very breadth in
in Pakistan that very few women talk on these things. Yes, of And course. it's a challenging field, and sometimes it's also a big risk for you as well. So going over there and motivated people, then meeting in the community. So all these come along, you know, and then now people realize that, okay, she's a motivational speaker. And I believe that your journey starts from one platform, but when after 20-25 years you have lot of things और लगता है कि भाई बहुत कुछ किया. So yeah. See, you have been changing your fields very often. अच्छा, Yeah. तो ये बताएं कि spirituality और motivational speaking इन दोनों को आपने connect करके कैसे present किया है? Spirituality is like all about your inner self. Firstly, you have to change your own inner self. You have to be, working with a pure soul. Yes. And जितनी भी ज़्यादा आपके अंदर नेगेटिविटी होती है, जितनी भी ज़्यादा नेगेटिव इंटेंशंस होती हैं, वो सब आपको निकालनी होती हैं. स्पिरिचुअलिटी एक बिल्कुल डिफरेंट वर्ल्ड है जो आपको कनेक्ट करता है उन लोगों के साथ जो कि शायद इस वर्ल्ड में होते नहीं हैं और वो इस वर्ल्ड से जा चुके होते हैं, लेकिन वो आपके स्पिरिचुअल लीडर्स होते हैं. सो माय कोर स्पिरिचुअल लीडर इज़ इमाम अली अलैहिस्सलाम एंड आई हैव बीन इन हिज ट्रेनिंग फॉर मेनी ईयर्स. और मेरी एक ख़ास उनसे जो है ना बहुत ज़्यादा उनसियत है, मोहब्बत है और एक बहुत ज़्यादा अकीदत है. इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मेरी बहुत ज़्यादा अकीदत है. तो योर स्पिरिचुअल लीडर्स टेक्स यू एट देयर ओन पाथ. वो आपको अपने पाथ के लिए सिलेक्ट करते हैं और उसमें एक बहुत बड़ी एक समझ लें एक बड़े एजाज़ की बात होती है कि आप उनके लिए कुछ करें, आप लोगों को उस तरफ लेके आएँ जहाँ बहुत कम लोग आना चाहते हैं. सेकेंडली ये कि अल्लाह ताला के साथ लोगों का कनेक्शन मजबूत हो. जितना ज़्यादा स्पिरिचुअलिज्म में आपका अल्लाह से कनेक्शन मजबूत होता है उतना ज़्यादा आपकी बात दूसरों के दिल में उतरती है और आपको फिर एज ए मोटिवेशनल स्पीकर बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती. बिकॉज अ स्पिरिचुअल सोल इज़ दैट सोल कि जिसकी कही हुई बातों को लोग समझते हैं, उन्हें अडॉप्ट करते हैं और ना सिर्फ उनके इर्द गिर्द, क्योंकि वो पॉजिटिव वेव्स उससे निकलती हैं और पॉजिटिव वेव्स वाला इंसान जो होता है वो दूसरों को भी पॉजिटिविटी की तरफ लाता है. तो ये एक बहुत डिफरेंट फील्ड है और इसको मैंने स्टडी किया. आई हैव बीन टू डिफरेंट कंट्रीज लाइक ईरान, इराक एंड अदर कंट्रीज for only to get the taste of this journey कि ये जर्नी कैसे होता है. और इसमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका अल्लाह ताला से कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और आप सब कुछ अल्लाह से ही एक्सपेक्ट करते हो. अच्छा, what is happiness to you? Happiness is the inner soul. Happiness is for me is like if you are happy within your soul, you are happy outer as well. और आप अगर अपने अंदर खुश नहीं हो तो आपके चेहरा कभी मुस्कुराता हुआ नहीं होगा, आपका चेहरा कभी मुतमईन नहीं होगा. अक्सर हम ऐसे भी देखते हैं कि हम हंस तो रहे हैं but the inner soul is still hurting. So when you see people like that, what do you consult them? Like, what are the things that you would advise them to do? If I get hurt with a person who is also a human being, so this is my fault. बिकॉज देखिए लोग आपको हर्ट करेंगे. अब इस दुनिया में ज़ाहिरी सी बात है हमें जन्नात में हर्ट नहीं करना, जो लोग हमारे साथ हैं मखलूक़ात हैं उन्होंने ही हमें हर्ट करना है. सो इफ़ आई कैन बी रॉन्ग द अदर पर्सन कैन ऑल्सो बी रॉन्ग. तो कभी भी आप जब भी हर्ट फील हो या आप समझें, तो मैंने एक चीज़ हमेशा देखी है सानिया कि वो चीज़ आपके हक में नहीं होती. बिल्कुल. जिस चीज़ पे आप हर्ट होते हो या कोई शख्स या कोई ताल्लुक जो ख़त्म कर दिया जाता है, किसी जगह से आपको हटा के किसी दूसरी जगह ले जाया जाता है, उसमें कुछ अरसे बाद आपको पता चलता है कि ये आपके हक में बिल्कुल ऐसे ही होता है. तो नेवर फील हर्ट, नेवर फील इग्नोर्ड, नेवर फील रिजेक्टेड और डिसरिस्पेक्ट. यू शुड ऑलवेज ट्रस्ट इन अल्लाह's डिसीजन. ये अल्लाह के डिसीजन होते हैं, ये चीज़ें होती हैं जिसे हम कहते हैं दिस इज़ योर कोर डेस्टिनी. तो जो आपकी डेस्टिनी में लिखा जा चुका है वहाँ आपने जाना है और उन्हीं लोगों से मुलाकात करनी है जो डेस्टिनी में हैं. सो दिस इज़ योर कोर जर्नी ऑफ 60 to 70 years and you find out the ways. अच्छा, हम ये भी देखते हैं कि आजकल जो हमारी यूथ है it's so much dependent on emotional relationships. Like before anything else, we think about being emotionally attached to somebody, even if they are our friends or the peers or parents even. So what is your advice to the kids that are involved in that, and the parents, how should they keep a check on their children, and as well as like keep a moderate effect on their kids, like to how much to feel and where to keep their feelings? देखें, इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है. ये आजकल हमारे पास जितने भी लोग काउंसलिंग के लिए आते हैं वो सबसे बड़ा इशू ये है कि यूथ जो है वो बहुत ज़्यादा डिसहार्ट फील करती है.
रिलेशनशिप्स बनते हैं, चल नहीं पाते, रिलेशनशिप्स बहुत जल्दी ब्रेक होते हैं। प्रॉब्लम उसमें ये आती है कि एक्सपेक्टेशन का लेवल बहुत हाई होता है, ठीक है। आपकी फ्रेंडशिप में भी एक्सपेक्टेशन है तो बहुत हाई है, अगर रिलेशनशिप में है तो वो भी बहुत हाई है। सेकेंडली सानिया, इस दुनिया में और स्पेशली हमारी यूथ को हर चीज़ में जल्दी बहुत है जी। वो कहते हैं ना, कम से कम अगर आप एक घर भी चेंज करो तो उसमें 2 साल तो रुको, अगर कोई जॉब भी चेंज करो तो 2 साल तो उसमें टाइम दो। तो जब आपके पास ऐसे केसेस आते हैं तो फिर आपकी फर्स्ट फॉर फॉरमोस्ट एडवाइस क्या होती है, और आप उनको पॉइंट आउट कैसे कर लेती हैं कि ये वाला इनके साथ मसला है? फर्स्ट और फॉरमोस्ट एडवाइस तो यही होती है कि ओके, काम डाउन, स्टे कूल, कोई बात नहीं लेकिन जिंदगी यही इसी का नाम है। जी। लाइफ में अगर आप हर्ट नहीं होंगे तो फिर तो आप सीखेंगे नहीं। बिल्कुल। आपको सिखाया जाता है मुख्तलिफ तरीकों से, और अल्लाह ताला आपकी हेल्प भी करते हैं। देखें, जो चीज़ अगर नेगेटिव है, अगर कोई शख्स जानबूझ के एक स्नेक के पास जा रहा है तो अल्लाह ताला तो उसे नहीं जाने देंगे ना। इफ यू आर ए गुड सोल, definitely you will be connecting to a good soul. If you are not a good soul and something evil is there within you, probably शायद कोई evil pathway पे आपके लिए जाना आसान हो जाए, लेकिन वक्त आने पे आपको वहाँ से भी वापस लाया जाएगा। So ये सब चीज़ें हमारे पैरेलल वर्ल्ड में चल रही होती हैं। हमें बहुत सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में इस तरह से होती हैं, बहुत सारे लोग हमें क्यों छोड़ जाते हैं, क्योंकि वो हमारे साथ नहीं चल पाते। और आफ्टर 4 ईयर 5 ईयर आपको पता चलता है कि जी ओ उसकी तो फलां से शादी हो गई, अच्छा उसकी तो एंगेजमेंट टूट गई किसी और। क्यों? बिकॉज दैट पर्सन वॉज नॉट इन द लक ऑफ हर or in the luck of him. So that's a pretty obvious decision. अगर आपके डिसहार्ट हुए हो, अगर आपको कोई छोड़ गया है, आप जिंदगी में जॉब भी चेंज करते हो, आप जिंदगी में डिफरेंट सिटीज चेंज करते हो। अच्छा, ये पेरेंट्स और बच्चों का आपस में रिलेशन हम कैसे बेहतर बना सकें? कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन कैसे बनाई जाए, क्योंकि पेरेंट्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा अक्सर देखा जाता है बिजी होती हैं, जो माएँ होती हैं वो किचन में बिजी हैं, जो बाप हैं वो सुबह जाते हैं शाम को वापस आते हैं, तो बच्चे जो होते हैं वो आपस में कनेक्ट भी नहीं कहीं सही तरीके से कर सकते। टेक्नोलॉजीज का दौर आ चुका है, बच्चे जो हैं यूट्यूब देखते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं, ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, वहीं से फ्रेंडशिप बनाते हैं, और उन्होंने एक वर्चुअल अपनी रियलिटी बना ली हुई है जो कि टेक्नोलॉजी में ही बेस करती है, मतलब हमारी जिंदगी है तो कंप्यूटर से है। एक्चुअली इसमें ये होता है कि देखें, आप पहली चीज़ से कम्युनिकेशन ज़रूर रखें। आपको अपने बच्चों के ना सिर्फ उनके पूरी रूटीन का पता होना चाहिए, उनसे कम्युनिकेट करना चाहिए, उनके स्कूल लाइफ का, उनके फ्रेंड्स का पता होना चाहिए, उनके इंटरेस्ट पता होने चाहिए, प्लस ये कि वो किन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं आपको वो पता होना चाहिए। अगर आप बतौर पेरेंट्स अपनी जिम्मेदारी सिर्फ पैसा कमाना समझते हो तो दिस इज़ योर प्रिटी फेलियर, यू आर गोइंग टूवर्ड्स ए फेलियर। अगर आप उनको वक्त नहीं देते हैं, आप अपने दिन में 1 घंटा दें, 2 घंटे दें, आप उनसे बात करें, आप उनके साथ वॉक पे चले जाएं, आप उन्हें जिम ले जाएं, कोई ऐसी एक्टिविटी आप रखें जिससे आपके बेटे और बेटी में कनेक्शन हो और सिबलिंग्स का आपस में कनेक्शन हो। आप उनके साथ डिनर पे टाइम पे इकट्ठे बैठें, मतलब जितना ज्यादा देखें, एक फैमिली को स्ट्रांग होना, बीच में कोर रिलेशंस का कितना स्ट्रांग है एक बंदे की पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, बहुत ज्यादा। क्योंकि देखें, इसी से तो उसे ट्रस्ट मिलता है, उसे अपने फैमिली मेंबर्स का पता चलता है, उसे ये पता चलता है कि मेरे पीछे कोई सपोर्ट है, ठीक है। देन आप उसके अंदर ये चीज़ भी इनबिल्ड करते हो कि व्हेनेवर यू विल बी इन हार्ड टाइम आई विल बी स्टैंडिंग विद यू। आपकी बहुत सारी काउंसलिंग है, आपके बच्चों के फ्यूचर क्या बनना है, उनका इंटरेस्ट क्या है। हो सकता है मैं अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाह रही हूँ लेकिन उसका इंटरेस्ट हो पेंटिंग में, तो मुझे तो नहीं पता चलेगा जब तक कि मैं ये चीज़ ऑब्जर्व ना करूं, ठीक है। मुझे एक फीमेल है, उसका एक्टिंग में बहुत शौक है एंड शी इज़ परफेक्टली फाइन कि वो बन सकती है, लेकिन मैं उसे कह दूं नहीं तुम मेडिसिन पढ़ो, तुमने जो है डॉक्टर बनना है। तो देखें, ये कनेक्शन होता है, पेरेंट्स का ट्रस्ट होता है, पेरेंट्स का एक ख़ास तरीक़ेकार होता है उनसे अटैच होके उनकी लाइफ में इन्वॉल्व होना और उन्हीं की लाइफ को फिर बेहतर करना, जैसे हमारे पेरेंट्स हैं। बिल्कुल ऐसे ही वालिदैन अगर दोस्त हो तो फिर बंदे को ना डिप्रेशन होता है और ना कोई ऐसी एंजाइटी वगैरह से गुजरना पड़ता है। और डिप्रेशन में तो देखें, डिप्रेशन में वो इंसान जाता है कि जो समझता है कि मुझे दुनिया में सब कुछ मिलेगा। दुनिया में सब कुछ नहीं मिलता, ये जो दुनिया है इसमें आपको बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, और सबसे बेहतरीन चीज़ जो आप दुनिया में छोड़ते हो ना, वो ये होता है कि जहाँ आप किसी को खुशी दे दो। अगर आपकी कुर्बानी से, सेक्रीफाइस से कोई और खुश हो रहा है तो मैं तो कहती हूँ प्लेट में उठा के दे दो उसकी आपको जज़ा बहुत मिलती है। तो कभी भी डिप्रेस नहीं होना चाहिए, डिसहार्ट नहीं होना चाहिए। जो ब्रेव लोग होते हैं वो जिंदगी में बहुत स्ट्रगल करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, वो कहते हैं खुश रहो, देखी जाएगी ऐसे ही। अच्छा, विमेन एम्पावरमेंट के लिए आपका क्या विजन है और क्या मैसेज है ऐसी औरतों को जो आपको देख रही हैं?
विमेन एम्पावरमेंट तो एक इस तरह की चीज़ है कि मैंने खुद इस कॉन्सेप्ट से बहुत कुछ सीखा है और मैंने एक इंडिपेंडेंट सेल्फ मेड लाइफ बनाई है। मैं अपनी मर्ज़ी से जर्नलिज्म की फ़ील्ड में आई थी और मुझे बहुत शौक़ था इस फील्ड में आने का। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 2000, जब इस फील्ड में इतनी ज़्यादा फीमेल्स नहीं थी। तो इस फील्ड में आके एक कॉन्फिडेंस आता है, आप में एक बोल्डनेस आती है, आप में एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, आप में एक काम करने का जज्बा आता है, पैशन आता है। तो लाइफ में इंसानियत जब भी कोई फीमेल या मेल आके बढ़ते हैं ना, तो अपने पैशन से बढ़ते हैं। अगर आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, जैसे आप माशाल्लाह इंटरव्यूज दे रहे हो, तो आपका ये पैशन है। अगर आपका पैशन आपका कैरियर बन जाएगा ना, तो उससे बेहतर कोई बात नहीं होती। दूसरा मेरा शौक था स्पिरिचुअलिटी का और ये मुझे हमेशा से था। तो आई वॉज ऑलवेज वेरी वेरी कीन ऑब्जर्वर कि अम्बिया कराम की लाइफ क्या है, आइमा कराम की ज़िंदगियाँ क्या रही हैं, कोट्स पढ़ने का, रसूल पाक की हदीस का मुझे हमेशा शौक़ रहा है। और मैंने इस चीज़ को लर्न किया फिर 2013 ऑनवर्ड्स। मैंने कहा नहीं, ये मैंने सीखना है। तो दो चीज़ों से आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते हो, एक कि आप लर्न करो नई चीज़ें और नए डायमेंशंस देखो। दूसरा ये कि अपने पैशन को फिक्स करो कि दिस इज़ माई पैशन। जैसे कम्युनिकेशन, चीज़ों को तलाश करना, डिस्कवर करना, नए आइडियाज़, नए वेंचर्स में जाना, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना, दिस हैज़ बिन माई कोर पैशन। और इसके साथ साथ फिर अब लोगों को सर्व करना, सर्व टू कम्युनिटी। बाय द एंड द बेस्ट थिंग इज़ दैट कि चाहे आप कम्युनिकेशन से करो, चाहे आप कोई इदारा खोलो, चाहे आप एजुकेशन में लोगों को पढ़ाओ, आप सर्व द कम्युनिटी। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच गाइस, दिस वाज इट। Thanks for watching. Allah Hafiz.